India is an interesting case. It's a democracy, but its leader, Narendra Modi, is no Democrat. Inciting violence against Muslims was an important factor in his meteoric rise. I may be naive, but I expect a democratic revival in India. The man who broke the Bank of England, a man who is known and designated so by a nation as an economic war criminal, has now pronounced his desire to break the Indian democracy. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूआईपी न्यूज़। आज का जो टॉपिक है वो है जॉर्ज सोरस। जॉर्ज सोरस जो पूरी तरह से आप कह सकते हो कि बड़े बड़े देशों के ख़िलाफ़ वो इकोनॉमिक वार चलाता है और आज के टाइम पे उसका एक ही एजेंडा है कि किसी भी तरह से इंडिया की करंट गवर्नमेंट को डीरेल करना है, क्योंकि उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि एक हिंदू ओरिएंटेड गवर्नमेंट इंडिया में है। क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि अगर उनके पसंद की गवर्नमेंट है तब तो वहाँ सेकुलरिज्म है, अगर उनके पसंद की गवर्नमेंट नहीं है तो फिर वहाँ उस कंट्री में सेकुलरिज्म नहीं है। आप सोचो, वो हंगरी को बिलोंग करता है और हंगरी नहीं चाहता कि वो अपने कंट्री में वापस आए। उसके लिए हंगरी ने एक स्पेशल अपना लॉ पास किया और उस लॉ का नाम है स्टॉप जॉर्ज सोरस लॉ, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। वो नहीं चाहते कि जॉर्ज सोरस अपना किसी भी तरह का पैसा हंगरी में इन्वेस्ट करें। एक टाइम पे मलेशिया में भी जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे उसको लेकर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि इसके पीछे जॉर्ज सोरस का हाथ है। और जॉर्ज सोरस इंडिया में पिछली बार 2018 में उसने मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में $1 बिलियन इन्वेस्ट किया था ताकि मोदी गवर्नमेंट वापस पावर में ना आ पाए। आज की डेट में उसकी जो नेट वर्थ है वो अराउंड $8.5 बिलियन है, जो कि उसकी पहले किसी समय नेट वर्थ मोर देन $40 बिलियन हुआ करती थी। तो वो जो छोटी इकोनॉमी के जो कंट्रीज़ हैं उनको वो बहुत इजीली इम्पैक्ट कर लेता है और उसका एक ही एजेंडा होता है। किसी भी इकोनॉमी को वो हिट करता है तो उसका क्या तरीका होता है कि वो वहाँ के जो बड़े बिजनेसेस होते हैं, बिजनेस हाउसेस होते हैं, उनके ख़िलाफ़ वो एजेंडा चलाता है। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में उसने अडानी के ख़िलाफ़ एजेंडा चलाया हिंडरबर्ग के थ्रू। सो इस तरह से वो जो कंट्रीज़ हैं उनके इकोनॉमी को वो डिरेल करता है, उनको वीक करता है और फिर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है उसमें। कुछ लोग होते हैं जो साजिश करते हैं। वो ऐसा बंदा है जो कि साजिश के साथ साथ अपना पैसा भी लगाता है उस कंट्री को डिरेल करने के लिए। उसने 2020 में भी इंडिया के अगेंस्ट में बहुत कुछ बोला, 2023 में भी उसने इंडिया के ख़िलाफ़ बहुत कुछ बोला है और इंडिया की गवर्नमेंट ने इमीडिएटली उसको रेस्पॉन्स भी दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी रिपोर्टर ने हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से पूछा था कि इंडिया के ऊपर जो जॉर्ज सोरस का जो कमेंट है उसके ऊपर आपका क्या कहना है। तो उन्होंने उसको बोला था कि वो एक रिच ओपिनिएटेड ओल्ड मैन है जो न्यूयॉर्क में रहता है, इससे ज़्यादा वो हमारे लिए कुछ नहीं है। Nationalism, far from being reversed, made further headway. The biggest and most frightening setback occurred in India, where the democratically elected Narendra Modi created a Hindu nationalist state, imposing punitive measures on Kashmir, a semi-autonomous Muslim region, and threatening to deprive millions of Muslims of their citizenship. अब प्रॉब्लम क्या है कि वो इंडिया में कुछ भी क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है। आप सोचो, अगर वो 30-40 बिलियन डॉलर तक की इकोनॉमी को वो इम्पैक्ट कर सकता है जो उसकी वर्थ थी। आज की डेट में उसकी जो नेट वर्थ है वो करीब $8.5 बिलियन है, क्योंकि उसने अराउंड $34 बिलियन किसी को डोनेट कर दिए थे।
क्योंकि अब वो 92 ईयर्स ओल्ड है, सो मे बी ही माइट हैव सम अदर एजेंडा. सो बट इंडिया को इतनी आसानी से इम्पैक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडिया आज की डेट में $650 बिलियन से ज़्यादा तो इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स है. इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 3 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है. तो आप समझ सकते हो कि उसके पास $8.5 बिलियन हैं और हम $3000 बिलियन की इकोनॉमी है, तो हमारे ऊपर उसका कोई खास असर होने वाला नहीं है. Dr. Jayshankar, a lot of your commentary was focused on democracy and furthering democracy and different forms of democracy. There are occasional comments that we see on the undermining of democracy in India, most recently in the context of the BBC, and just yesterday at the Munich Security Conference, George Soros spoke on many issues, but specifically on open and closed societies, and called on institutional reform in India. How do you, as Foreign Minister of India, explain this when you're dealing with your Quad ministers in particular, as well as others? Well, look, I actually made 2 points. One, how the world is changing. It is rebalancing. It is less Euro-Atlantic. I don't think everybody gets that. I think old habits die hard. I mean, very candidly, there are still people in the world who believe that their definition, their preferences, their views must override everything else. So, since you mentioned this specific example, I don't know how familiar people are with what was said at the Munich conference. Essentially, Mr. Soros said India is a democratic country, but he doesn't think the Prime Minister of India is a Democrat. And by the way, a few years ago, in the same conference, I was there at that time, he actually accused us of planning to strip millions of Muslims of their citizenship, which of course didn't happen. It was a ridiculous suggestion. But you have to understand what this actually means. I could take a view that the individual in question, Mr. Soros, is a old, rich, opinionated person sitting in New York who still thinks that his views should determine how the entire world works. Now, if I could only stop at old, rich and opinionated, I would put it away. But he is old, rich, opinionated and dangerous, because what happens is when such people and such views and such organizations, they actually invest resources in shaping narratives. I spoke about globalization. Now, what globalization does is it actually creates a lot of the seamlessness of globalization, which creates all the opportunities, also allows narratives to be shaped, money to come in, foundations to go about their agenda. Now, in this particular case, I mean, it is very clear that he has very strong political preferences. He actually thinks that, doesn't matter that this is a country of 1.4 billion people, we are almost there, whose voters decide how the country should run. He actually thinks, well, if, and again, I cite him as an extreme example, okay? But there are other, manifestations of this in different countries, where people like him think an election is good if the person we want to see wins. If the election throws up a different outcome, then we actually will say it's a flawed democracy. This to my and the beauty is all this is done under the pretense of advocacy of open society, of transparency, etc. So our generation, we have grown up with concepts like regime change, which influence operations. Now, you can call it what you will. I mean, to me, this really looks the same, with a gloss of some kind of do-goodism on it. So, for me, it's actually necessary today
that we have today a serious conversation on democracy. You know, when I look at my own democracy, I mean, I have today a voter turnout which is unprecedented, electoral outcomes which are decisive, electoral processes which are not questioned. We are not one of those countries where after the election somebody goes to arbitrate in court. Okay? We don't have any hanging chads either. And you know, where you actually say, I will sit in judgment over the verdict of voters. Now, my sense of democracy is the voters are supposed to decide. And it worries us because look, we are a country which went through colonialism. We know the dangers of what happens when there is outside interference in whatever guise in your politics. If you do this kind of scaremongering, like millions of people will be deprived of citizenship, it actually does real damage to our societal fabric, because somebody out there believes you, and you don't leave it to accident, by the way, you back it up with an operation. So you create that kind of fear psychosis, and then you use that to validate your original judgment. So I do think today between, you know, whose democracy, whose globalization, why, you know, the transparency of how global processes work, these are real issues which need to be debated. किसी भी तरह से हमारे कंट्री को या हमारी इकोनॉमी को या हमारे बिजनेस हाउसेस को या हमारे पॉलिटिशियंस को, अब जो पॉलिटिशियंस लाइक नरेंद्र मोदी हैं, हमारे यहाँ कोई भी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो या कोई भी किसी की भी गवर्नमेंट हो, वो पब्लिक के वोट से जीत कर आता है. हु इज़ जॉर्ज सोरस जो अपनी मर्जी से हमारी कंट्री को या हमारी पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट कर सके? ये आपको डिसाइड करना है, हमको डिसाइड करना है, ना कि जॉर्ज सोरस को डिसाइड करना है. हमें इस तरह के लोगों से बहुत बचकर रहना है. इन लोगों का एक ही एजेंडा होता है कि ये कम्युनलिज्म को बढ़ावा देते हैं, हिंदू मुस्लिम को लड़ाना है, सिख हिंदू को लड़ाना है, या मुसलमान को किसी तीसरे आदमी से लड़ाना है, या किसी के खिलाफ कोई एजेंडा चलाना है. ये कुछ भी कर सकते हैं पैसा खर्च करके. आज की डेट में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जिनको जॉर्ज सोरस और उसके ऑर्गेनाइजेशंस फंड करती हैं, और उनका एक ही एजेंडा है कि करंट गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा जहर उगलना और उससे देश को कमज़ोर करना. लेकिन जब तक हम और आप साथ हैं, इस तरह के लोगों की कभी भी किसी भी तरह की कोशिश कामयाब नहीं हो पाएगी. ये हमें मिल के रहना है, और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इस तरह के जो भी लोग एजेंडा चलाते हैं उस पर हमें बहुत ज़्यादा नज़र रखनी है, और किसी भी तरह का निगेटिव न्यूज़ को पहले वेरीफाई करना है, फिर उसके ऊपर ट्रस्ट करना है. क्योंकि आज की डेट में व्हाट्सएप और यूट्यूब पर जो न्यूज़ आती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो सारी ठीक हो. तो आप अपना ध्यान रखें और इस तरह की न्यूज़ से बचकर रहें, इस तरह के लोगों से बचकर रहें, पैसे के लालच में ना आएँ, और अपने देश के बारे में पहले सोचें. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. बी सेफ and take care of yourself. Good day. Bye bye.